भाई आज सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो मैकेनिक्स ग्रेविटेशन एंड मोशन अंडर द ग्रेविटी। भाई ये टॉपिक करते हैं सिर्फ पी वाई क्यू। भाई हमारा सिंपल बेसिक है कि हमको पी वाई क्यू गलत नहीं करना है। तो फर्स्ट है मैकेनिक्स। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दिस लॉ वाज गिवन बाय किम। भाई कौन दिए थे? वही थे न्यूटन जी। अब ये थोड़ा नहीं, ये इसका देख लो, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? द फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन इट विल बी एट अ रेस्ट, एंड इफ द ऑब्जेक्ट इन मोशन देन इट विल बी इन मोशन अनलेस एंड एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब तो कोई बाहर का फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक वो रेस्ट पे ही रहेगा। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? द सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन इट। ठीक है। और थर्ड है, इट स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं। पेंडुलम क्लॉक बिकम स्लो इन समर बिकॉज। स्लो क्यों हो जाता है? क्योंकि द लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीजेज। आंसर है सी। ठीक है, ये फॉर्मूला थोड़ा याद रख लेना है। ठीक है, कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम टी इज इक्वल टू 2/√L अपॉन जी। तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L। ठीक है। तो ड्यूरिंग द समर द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीजेज ड्यू टू द थर्मल एक्सपेंशन। एज द लेंथ इंक्रीजेज द टाइम पीरियड T increases and pendulum takes more time to complete one oscillation, so the pendulum clock becomes slow in a summer. During winter length decreases, then due to the decrease the time period of the clock become fast. ठीक है, मतलब सिंपल है कि गर्मियों में जो टाइम है वो जल्दी होता, सर्दियों में टाइम जल्दी होता, गर्मियों में टाइम स्लो हो जाता है। ठीक है, पेंडुलम वाले क्लॉक में। रॉकेट वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल? सिंपल है, मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम। ठीक है, प्रिंसिपल। रॉकेट वर्क्स ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एज द इंजन ऑफ रॉकेट इग्नाइट्स द एग्जॉस्ट गैसेज गो इन वन डायरेक्शन, द रॉकेट गोज इन द अदर डायरेक्शन टू कीप द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट। जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम। जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ linear momentum. The jet aircraft flies very easily and smoothly in the lower stratosphere. What could be the appropriate explanation? दोनों ही सही है। ठीक है, तो there are no clouds or water vapor in the lower stratosphere and there are no vertical winds in the lower stratosphere. तो आंसर है सी। ठीक है, दोनों सही है। ठीक है, देखते हैं। अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ बोट इन स्टिल वाटर। इफ ही मूव्स टूवर्ड्स द कॉर्नर देन द बोट विड गो अवे फ्रॉम द कॉर्नर। तो आंसर है बी, मूव अवे फ्रॉम द कॉर्नर। ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देयरफॉर when a man starts moving towards corner of the boat will move away from the corner. One person is sitting in a train having his face towards engine. When he tosses a coin it falls to it back. Train is moving. ट्रेन इज मूविंग इन अ फॉरवर्ड विद एक्सेलरेशन। डी आंसर है। ठीक है, व्हेन द ट्रेन इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन स्पीड ऑफ train increases with the time, while the coin inside the train does not move with the same acceleration, hence the coin will fall back to the person. ठीक है। 8. As the train start moving the head of the passenger sitting inside lean backward because of inertia of rest. ठीक है, when a train suddenly starts moving the upper part of the passenger's body is at rest and the lower part of the body start moving along with the train, so the upper part of the body has a tendency to remain in a state of rest, hence person lean backward. ठीक है। in wind power which form of energy is converted into electrical energy? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आंसर है ए, विंड इज यूज टू प्रोड्यूस
electricity using the kinetic energy created by air in a motion. This is transformed into electrical energy using wind turbine or a wind energy conservation. Wind first hits a turbine's blade, causing them to rotate and turn the turbine connected to them that changes the kinetic energy to rotational energy by the moving a shaft which is connected to a generator and thereby producing electrical energy through electromagnetism. While floating in a sea, how much part of the iceberg is above the sea level? 1 by 9. The density of ice is 0.92 and the density of water is 0.0. ठीक है, this means that ice has 9 by 10th of or a 90% of the water density, so the 90% of the iceberg is below the sea level, so 1 by 9th part of the iceberg is above the sea level. ठीक है, when the velocity of a movable object is doubled, then its kinetic energy will be 4 times. सिंपल फॉर्मूले से है और ये कितनी बार पूछा गया, 6, 13, 13। ठीक है, ग्रेविटेशन कुछ पूछते हैं। द वेट ऑफ द बॉडी इज मैक्सिमम एट द पोल, क्योंकि उसका डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से थोड़ा पास होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स एट अ पोल इज मैक्सिमम वाइल एन इक्वेटर it is minimum. It is due to the fact that the value of G is maximum at the pole and minimum at the equator. As we know that the weight of the body is mg, where m is the mass of the body and g is the acceleration due to gravity. Therefore weight of the body is maximum at poles. If an apple is released from an orbiting spaceship, it will be moved along the spaceship at the same speed. ठीक है, इफ एन एप्पल इज रिलीज फ्रॉम एन ऑर्बिटिंग spaceship, it will be acquire same speed as that of the spaceship, as there is no atmosphere in a space, so apple will move along the spaceship with the same speed. Astronaut in a question 14, astronaut in space cannot stand erect. This is because in space, answer A, there is no gravity. Astronaut in space cannot stand erect or afloat around in a space because there is a no gravity in space. 15. The iron ball which has a weight of 10 kg on earth and would have weight in space. स्पेस में क्या वेट होगा, जब ग्रेविटी नहीं है तो ज़ीरो होगा। आंसर है डी। ठीक है, सब जानते ही हो। ठीक है, 16. If the distance between the earth and the sun were twice what is now the gravitational force exerted on the earth by the sun would be. Answer is 1/4 of what it is now. ठीक है, यही F इक्वल टू G अपॉन M1 M2 अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है, if a bullet is fired perpendicular 17, if a bullet is fired perpendicularly, it takes time t1 to reach the maximum point. From there it takes time t2 to reach the ground. In such situation, which of the following is correct? Answer B, t1 is equal to t2. Any object thrown perpendicularly at any speed will come back to earth at the same angle, the speed at the same time. Therefore t1 is equal to t2. Question 18. If the gravitational force of the earth suddenly disappear, which of the following will be correct sequence? तो आंसर ए, the weight of an object will become 0 but the mass will remain same. ठीक है, 19. A person whose weight is 60 kg on earth has weight approximately 10 kg on the moon. What would be his weight in a space? देखो स्पेस का सिंपल है, स्पेस में ग्रेविटेशन है ही नहीं तो ज़ीरो होगा। आंसर है। ठीक है, when any object is shifted to earth from moon, मून से कोई अर्थ पे होता है तो क्या होगा?
तो सिंपल है आंसर है डी, इट्स वेट इंक्रीजेज ऑन द अर्थ वाइल इट्स मास रिमेन अनचेंज। ठीक है, आंसर है डी। ग्रेविटेशन ऑन मून इज 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑन अर्थ, सो एज वी नो दैट वेट W इक्वल टू mg, देयरफॉर इफ एनी ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड टू अर्थ फ्रॉम द मून its weight would increase while its mass remain unchanged. Question 21, when any substance is moved from earth to moon, अब अर्थ से मून की तरफ जा रहा है तो क्या है, आंसर होगा बी, इट्स वेट डिक्रीजेस। सिंपल है। अब भाई ये नया टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रो मैटर। देखो इन सब में ना कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं पहले फिजिक्स करवा रहा हूँ, ज़्यादा इसमें है नहीं, और 1 घंटा करवाऊँगा मैं, तो 1 घंटे में भाई जितना होगा देख लेंगे। स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू, आंसर है बी, सरफेस टेंशन। ये तो भाई जानना चाहिए, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। रेन ड्रॉप स्टार्ट टू फॉर्म इन अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर ड्यू टू द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर। सरफेस टेंशन टेंड्स टू कीप द वाटर ड्रॉप्स वॉल्यूम मिनिमम, देयरफॉर ड्यू टू द सरफेस tension rain drops attain spherical shape. Question 2, a weightless rubber balloon is filled with 200 cc of water, its weight in water is equal to 0, आंसर है डी, 0। द वेट ऑफ वाटर वैल्यून इन वाटर विल बी 0 एज बून फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर एंड डज नॉट सिंक। एडिशनली वेट ऑफ द वाटर इन द वैल्यून इज सेम एज दैट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट, सो द वेट ऑफ द वैल्यून इन वाटर इज इक्वल टू 0। A piece of ice is floating in a beaker full of water. When all the ice would melt, then आंसर है डी, वाटर लेवल वुड रिमेन अनचेंज। ठीक है, कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हेन आइस मेल्ट्स वाटर लेवल डज नॉट राइज बिकॉज द आइस डिस्प्लेसेस द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर एज इट वुड कंट्रीब्यूट वंस इट मेल्ट्स, सो वाटर लेवल वुड रिमेन अनचेंज। क्वेश्चन 4, in a pressure cooker food is cooked in a shorter time because, answer A, the boiling point of water increases. Food is cooked faster in pressure cooker because steam trapped inside the pressure cooker increases its pressure. Due to increased stream pressure, boiling point of water is increased and therefore high temperature inside the pressure cooker cooks food faster. क्वेश्चन 5, अंडरग्राउंड वाटर रिमेन एट हाउ मच प्रेशर, तो आंसर है 1/3 एटमॉस्फेयर। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर रिमेन एट 1/3 ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्वेश्चन आते हैं 6, एट विच टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। डेंसिटी ऑफ वाटर किस पे मैक्सिमम होता है, सब जानते हैं, ए, आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। व्हेन वाटर इज हीटेड एट 0 डिग्री सेल्सियस इट शोज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिनोमिनन दैट इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज बिटवीन 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। एट टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग, हिंस volume of water is minimum at 4 degrees Celsius and therefore the density of water would be maximum at 4 degree Celsius। तो यहाँ से याद क्या रखना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर मिनिमम कब होगा 4 डिग्री सेल्सियस पे, और डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम कब होगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, 7वां, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस देन इट्स वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। आंसर है बी, डिक्रीज होगा, जस्ट हमने पढ़ा अभी। ठीक है, द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट, अब देखो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करोगे, 273 + 4, तो आंसर होगा बी, 277 केल्विन। ठीक है, बॉडी वेट इज हाईएस्ट इन विच अमंग द फॉलोइंग, आंसर है C. Weight of an object will be maximum in a medium which has a low density. In the given option, hydrogen has the minimum density, therefore the body weight would be maximum in hydrogen. ठीक है, 10. While lifting a bucket of water from a well, we feel that the bucket is
आंसर ए becomes heavier above the surface of water. क्यों? क्योंकि when inside of water the bucket of water experience an equal upthrust equal to the weight of water displaced by it, so it feels lighter uh, while in water and becomes heavier above the surface of water. ठीक है. 11वां, the leaning tower of Pisa does not fall because the answer it is the vertical line drawn from the center of the gravity falls within the base. Any object stay in a rest until a vertical line draw. Therefore, its center of gravity passes through its base. The leaning tower of Pisa does not fall because the vertical line drawn from the center of gravity passes through it. ठीक है. Question 12. While traveling by a plane, the ink of the pen starts to come out. क्यों? Answer is due to the decrease in air pressure. At the higher altitude, air pressure decreases, which expands air inside the pen. It forces the ink of the pen to come out. Question 13. Increasing the amount of a substance does not change its answer is D, density. The density of a substance is defined as the mass per unit volume. Therefore, the density would not change by increasing the amount of substance. Question 14. If an unsaturated sugar solution is prepared by mixing 100 gram of sugar with a half liter of water, which of the following physical quantities will not change? Answer D, volume. Volume is a measure of how much space an object takes up. When sugar dissolved in water, the sugar molecules move into the interstitial space of the water. So by mixing 100 gram of a sugar with a half liter of water would not change the volume of the sugar solution, whereas mass, density and concentration of this solution would change. Question 15. Oil spreads on water surface because answer is surface tension of oil is less than of water. ठीक है, इसलिए वो उसके ऊपर स्प्रेड रहता है ऊपर. सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज मोर देन द ऑयल. देयरफॉर व्हेन ऑयल इज poured over water, the greater the value of surface tension of water pulls it in all direction and such as it spreads on a water surface. ठीक है. The pressure inside the soap bubble is more than the atmospheric pressure, less than the atmospheric pressure, equal to the atmospheric pressure and half of the atmosphere. देखो सी पे जाओ. 16 का सी नो गलत है. 16 का ए भाई मेरा भी गलत हो रहा. ये कैसे हो गया? द प्रेशर इनसाइड द सोप बबल इज मोर देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर. 16 का ए. ठीक है. द एयर ट्रैप्ड इनसाइड द सोप बबल विल बी एड अ प्रेशर टू द सोप फिल्म from inside and the air surrounding to the bubble will add a pressure to the soap film from outside. This means the soap film feels a pressure from the two sides, inside and the outside. The air pressure inside the bubble will always be larger than the air pressure from the outer. ये याद रख लेना. ठीक है, मैं भी भूल गया था. The air pressure inside the bubble will always be larger than the air pressure from the outside. ठीक है. 17. A needle sinks in water where a ship made up of iron floats on it because answer D, specific gravity of the needle is greater than that of the water displaced by it. ठीक है. Substance having a relative density less than 1 will float on water, whereas substance having relative density more than 1 will sink in water. Relative density is defined as the ratio of the density of that particular substance with water. Specific gravity of needle is more than water, so it sinks in water. Ships are designed in such a way. Specific gravity of needle is more than the water, so it sinks in water. Ships are designed in a such way that its specific gravity is less than that of water, so ship floats on water. ठीक है. When a ship enters a sea from a river, what happens? Answer A, it rise a little. क्योंकि when a ship enters a sea from a river, it rises
A little, because salty water of a sea has a higher density than the river water. Due to the more density in a sea water, upwards buoyant force is producer more in a comparison to river water. Hairs of shaving brush. Hairs of shaving brush uh, clings together when the brush is removed from the water due to D. Surface tension. When shaving brush is removed from water, hairs of brush clings together as the water which is attached to the hairs of brush tries to minimize the surface tension area in order to reduce the residual forces. This action creates a tension which is known as the surface tension. Hence, hairs of the shaving brush clings together when the brush is removed from the water due to the surface tension. Question 20. Why water boils below 100 degrees Celsius at high altitude? Answer A. Boiling point comes down due to the low atmospheric pressure. ठीक है, अब आते हैं साउंड्स एंड वेव मोशंस पे. ठीक है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बीपीएससी में भी. ठीक है, द साउंड विल हैव अ हाईएस्ट वेलोसिटी इन स्टील. आंसर है डी, स्टील में. Sound travel fastest through solids because molecules in a solid medium are much closely arranged than the liquid or gases, allowing sound waves to travel more quickly through in its solid. In fact, sound waves travel over 17 times faster through steel than air. Question 2. Which of the following used to a TV remote control unit of operative TV set? Answer है D. Radio waves. Remote control devices are usually based on the two types of technology, namely infrared radiation technology and radio frequency technology. Radio frequency remote transmit binary codes to the receiver via radio waves. This gives radio frequency remotes a much greater range than the infrared remote. So the radio waves used to a TV remote control unit operative or TV set. Which electromagnetic radiations is used in the remote control of a television? Answer A. Infrared. The technique used to transmit audio signals in television broadcast is? Answer is C. Frequency modulation. The technique used to transmit audio signals in television broadcast is frequency modulation. Frequency modulation is used to transmit audio signals in television transmission, while amplitude module technique is used to transmit video signal. Loudness of sound is measured in terms of following. Answer will be amplitude. It is a maximum displacement or a distance moved by a bow from its equilibrium position or a mean position. The loudness of sound depends on its amplitude. When the amplitude of vibration is large, the sound produces is loud. When the amplitude is small, the sound produces low. Loudness of sound is proportional to the square of the amplitude of the vibration producing the sound. For example, if the amplitude become twice, the loudness become 4 times of their initial value. The loudness is expressed in a unit called decibel. अब आते हैं 6th क्वेश्चन पे. कौन सा करेक्ट है? ठीक है, विद रेफरेंस टू द साउंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट? साउंड प्रोपगेट इवन इन वैक्यूम. वैक्यूम में साउंड बोल ही नहीं सकते, तो पहला तो गलत हो गया. स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल इन ऑल मीडिया. नहीं, दोनों गलत है. आंसर है डी. द प्रोपगेशन ऑफ अ साउंड इज नॉट पॉसिबल इन वैक्यूम. अ मीडियम इज नेसेसरी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड. द स्पीड ऑफ साउंड इज नॉट द सेम इन द all medium. The speed of sound in air is 332 meter per second, in water is 1493 meter per second, and in steel is 5130 meter per second. Thus the speed of the sound is different in all medium. तो दोनों में से कोई भी सही नहीं है.
7. In sitar, which type of sound variations are produced? आंसर है डी, स्टेशनरी एंड ट्रांसवर्स. स्टेशनरी एंड ट्रांसवर्स टाइप ऑफ अ साउंड वाइब्रेशन इज प्रोड्यूस्ड इन अ sitar. Transverse waves move in which all points on a wave oscillate along its paths at the right angle of the direction of the wave. Transverse wave can produce in any medium which have a rigidity. क्वेश्चन 8. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा सही नहीं है? ह्यूमन, अब ये चेक करते हैं. ह्यूमन ईयर बिकम मोस्ट सेंसिटिव एज 100 हर्ट, सही है. सी, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग इज 1/10 सेकेंड, ये भी सही है. परसिस्टेंस ऑफ विजन इज 1/16 सेकेंड, सही है. अब देखते हैं बी. ह्यूमन आई बिकम मोस्ट सेंसिटिव फॉर रेड कलर, जो कि ये गलत है. ठीक है. ह्यूमन आई बिकम मोर सेंसिटिव फॉर ग्रीन कलर, नॉट अ रेड. हमें ग्रीन देखते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, रेड नहीं. देखो, तुमने बहुत सारे चीज़ें भी देखी होगी, जैसे तुम कॉल काटते हो तो रेड वाला होता है, और कॉल रिसीव करते हो तो हरा वाला होता है. भाई मतलब यही है कि कौन सा सेम आँखों के लिए सही दिखता है तुम्हें. बहुत सारे पे तुम शॉपिंग करते हो, कुछ करते हो तो हरा क्लिक होता है. तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही वैसा फ्रेम बनाया जाता है कोई भी वेबसाइट का भी. ह्यूमन आई बिकम अ मोर सेंसिटिव फॉर अ ग्रीन कलर बट नॉट रेड color. Using Doppler shift theory, proved every color have a different wavelength. Green color wavelength is between red and blue, that's why it is a more sensitive. Sound moves like longitudinal wave, आंसर है बी. ठीक है. अब इसको समझाना भी है, देख लो भाई, समझना क्या है. इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम इज पैरेलल टू द प्रोपगेशन ऑफ द वेव. साउंड वेव्स इन एयर इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. फॉर ट्रांसवर्स वेव the displacement of the particle of a medium is perpendicular to the direction of the propagation of the wave. A ripple on the pond and the wave and the string easily, तो ये transverse wave है. Sound above the sound above what level is considered hazardous and noise pollution? आंसर है सी, 80 डेसिबल के ऊपर जैसे होगा तो भाई वो सिंपल है कि वो hazardous है और noise pollution है. ठीक है. 11. ह्यूमन ईयर कैन नॉट लिसन टू अ फ्रीक्वेंसी मोर देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग? आंसर है 20,000 साइकिल्स पर सेकेंड, ए है आंसर. ठीक है. अ नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन लिसन द साउंड फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 20,000 से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, लेकिन उससे ऊपर का नहीं सुन पाएगा. ठीक है. और ना ही नीचे का, 20 से नीचे वाला. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डेसिबल लेवल ऑफ द रस्टलिंग ऑफ अ ट्री लीव्स इन अ नॉर्मल सर्कमस्टांसिस? बी है आंसर 20 डेसिबल. द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन द डेसिबल और स्केल. सॉफ्ट साउंड, रस्टलिंग ऑफ लीव्स ऑन ट्री 20 डेसिबल, विस्परिंग 30 डेसिबल, कन्वर्सेशन 30 से 60 डेसिबल, मॉडरेट साउंड वर्किंग ऑफ कंप्यूटर 40 डेसिबल, ड्राइविंग ट्रैफिक 70 डेसिबल, नॉइस फ्रॉम मशीन 100 डेसिबल, स्पोर्ट्स इवेंट 105 डेसिबल. और मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ मोस्ट MP3 110 डेसिबल, जेट प्लेन का 120 से 40, एमरजेंसी सिग्नल का 120, रॉकेट का 180. विच इज़ बीइंग नॉट यूज्ड इन द नाइट विजन कैमरा? कौन सा यूज्ड नहीं होता है? आंसर है डी, एक्सरे रेडिएशन फ्रॉम ऑब्जेक्ट. एक्सरे रेडिएशन फ्रॉम ऑब्जेक्ट इज बीइंग नॉट यूज्ड इन नाइट विजन कैमरा. तो कौन कौन यूज़ होता है वो याद रख लो. एम्पलीफाइड लाइट, इंफ्रारेड रिसीवर, थर्मल रेडिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. Waves used for telecommunications are, answer D, microwaves. The waves that are used in the communication are radio waves, microwaves and a light, but in telecommunication microwaves is widely used. If VA, VW, VS are the speeds of sound in air, what water and steel respectively, then
ए कम डब्ल्यू ज़्यादा स्टील, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड से तो तुम जान ही जाओगे किसमें कम किससे ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखते हैं 16, पुट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम, वाटर, स्टील, नाइट्रोजन। सिंपल है, थर्ड वाला पहले करोगे, फिर वाटर, फिर स्टील। आंसर है बी, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन कौन सा सही है, तो आंसर है सी 134। तो 134 देख लेते हैं। द हार्ट वाइब्रेट्स एट अ इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। थर्ड, मैक नंबर यूज टू डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ अ साउंड, ठीक है। अल्ट्रासोनिक साउंड हैज़ अ फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 हर्ट्ज, ठीक है। स्टेटमेंट टू क्या है, स्पीड ऑफ अ साउंड इज मोर इन अ गैस देन इन लिक्विड एंड सॉलिड, ये गलत है, हम जस्ट ऊपर ही पढ़े हैं, ठीक है। वन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड इज पिच विच इज डिपेंड्स ऑन, पिच किस पे डिपेंड्स होता है, वैसे पिच तो वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, डी आंसर, नहीं बी है आंसर। पिच इज फ्रीक्वेंसी, 18 का बी फ्रीक्वेंसी, पिच इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। पिच इज अ perceptual property of a sound that allows their ordering on a frequency related scale, or a more commonly pitch is the quality that make it possible to judge sound as a higher and lower. This depends on the frequency of vibration of a waves. The faster the vibration of source, the higher is the frequency and the higher is the pitch. Hence pitch of sounds depend on frequency. Sound waves, answer D, can travel both in solid and gaseous medium, ठीक है। Sound is a form of energy which produces a sensation of hearing in our eyes, ears. Sound is a mechanical wave and needs to material medium like air, water, gas, steel, etc for propagation, ठीक है। Sound waves cannot travel through vacuum. Which wave can be transmitted through vacuum? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। विच वेव्स कैन नॉट, तो साउंड तो वैक्यूम में नहीं चल सकता है, ठीक है। द बेसिक यूनिट ऑफ साउंड आर, आंसर है बी, phoneme. The basic unit of sound are called phoneme. A phoneme is the smallest unit of spoken sound and it is often the one thing that is distinguishes one word from the another. Example, cat and the rat are only differentiated by phoneme. Ultrasounds are the waves of a frequency greater than 20 hertz. Answer है A, 20,000 hertz. Consider the following statements about the ultrasonic waves. ठीक है, they can destroy insects, ठीक है, they can clean clothes while removing dust, ठीक है, they can be used to treat disease, अल्ट्रासोनिक, ठीक है, they can control the automatic doors, ये भी हो सकता है। आंसर तो डी होना चाहिए, ठीक है। तीनों के तीनों, चारों के चारों ठीक है। 24वां, बैट कैन फ्लाई ड्यूरिंग द डार्क नाइट एंड ऑल्सो प्रे, दिस इज बिकॉज दे प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड गाइडेड बाय देम, ठीक है। 25 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द कॉस्मिक रे, कौन सा सही नहीं है, तो ए, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये गलत है, ठीक है। सही कौन कौन से, दे हैव अ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, दे आर मेड अप ऑफ अ हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल, दे ऑरिजिनेट फ्रॉम द सन। तीनों से ये गलत किया। कॉस्मिक रेजर एनर्जेटिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट अराइव फ्रॉम द आउटसाइड्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, द लोएस्ट एनर्जी कॉस्मिक रेजर प्रोड्यूस बाय ऑर्डिनरी स्टार्स लाइक सन, दे आर हाईली चार्ज पार्टिकल दैट मूव थ्रू अ स्पेस एट द नियर टू द स्पीड ऑफ द लाइट, मोस्ट कॉस्मिक रेजर एटॉमिक न्यूक्लियाई stripped of their atoms with protons. Cosmic rays must be electrically charged because they are affected by the Earth's magnetic field. Hence, cosmic rays are not electromagnetic waves. The visual sounds of an approaching train increases, whereas that of receding train decreases. The visual sounds of an approaching train increases, whereas the receding train decreases. This phenomenon is an example of answer T, Doppler effect. As the observer recedes,
away from the sources, the observed pitch or frequency becomes lower than that of the source. This motion-related frequency changes is called Doppler's effect. Hence, whistle sound of an approaching train increases, whereas that of receding train decreases due to the Doppler's effect. To hear a clear echo, the minimum distance between the reflecting surface and the absorber is, तो आंसर होगा डी 16.5 मीटर। भाई इको के लिए कम से कम 16.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए, ठीक है। 28। CT scan is done by using answer ID X-ray. The term computed tomography or a CT scan. Computed tomography or a CT scan refers to a computerized X-ray imaging produced in which narrow beam of X-ray is aimed at a patient and quickly rotated around the body, producing signals that are proposed by the machine's computer to generate cross-sectional image of the body. These images are called the tomographic images and contain more detailed information than conventional X-rays. ठीक है। क्वेश्चन, reverberant is a mainly feels in reverberant is mainly feels in large churches and in other large buildings because the walls, roof and the ground may cause multiple sound reflection. तो आंसर है ए, जो कि सही है, पूरा सही चीज़ें बोल रहा। मुझे भी नहीं पता है, वैसे चेक करते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अ साउंड created in a big hall will persist via repeated reflection from the walls, roofs and the ground until it is reduced to a value where it is no longer audible. The repeated reflection that results in this persistence of a sound is called reverberation. In an auditorium or a big hall, excessive reverberation is highly undesirable. To reduce reverberation, the roofs and the walls of the auditorium are generally covered with the sound absorbent materials like compressed fiber board, rough plaster or a draperies. The seat material are also selected on the basis of their sound absorbing produces properties. Hence explanation, ठीक है। The walls of the hall built for music concert should be absorb sounds. आंसर डी, ठीक है। In fiber optics communication, the signal travels in the form of light waves. Optical fiber communication is the method of a communication in which signal is transmitted in the form of light waves, and optical fiber is used as a medium of transmitting those light signals from the place to another. The signal transmitted in optical fiber is converted from the electrical signal into the light, and at the receiving end it is converted back into the electrical signals from the light, ठीक है। Radar is used mainly for, आंसर है सी, determining the presence and the location of the object with radio waves, ठीक है। आंसर है सी, determining the presence and the location of an object in with radio waves. Radar stands for radio detection and ranging system. Radio detection and ranging system. It is an electromagnetic system used to determine the presence and location of the object with the radio waves and distance of an object from the point where the radar is placed. It works by radiating energy into a space and monitoring the echo or reflected signals from the object. Television viewers using dish antenna to receive the satellite signals do not receive signals during the rain because,
आंसर है सी, इट मीन्स रेन ड्रॉप्स एब्जॉर्ब द एनर्जी ऑफ द रेडियो वेव्स। दूसरा, एंड द रेन ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स द एनर्जी ऑफ द रेडियो वेव्स फ्रॉम देयर ओरिजिनल डायरेक्शन। ठीक है, तो 2 एंड 3 है आंसर। ठीक है, gravitational wave were seen for the first time in, आंसर है बी, September 2015। In September 2015 scientists detected gravitational waves for the very first time. They used very sensitive instruments called LIGO, laser interferometer gravitational wave observatory. These first gravitational waves happens when the two black holes crash into one another. The collision happened 1.3 billion years ago. सोनार इज मोस्टली यूज्ड बाय नेविगेटर्स। ठीक है, सोनार आर यूज्ड फॉर अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, which of the following instrument is used for the locating submerged object in an ocean? सिंपल है, डी है आंसर, सोनार। ठीक है, रखता हूँ, बाय बाय, टाटा, ये कल करते हैं।